Good morning to all. So welcome to your science class in which we are doing a chapter digestion from your biology portion, and we learn about the process of digestion. We have started with the topic human digestive system, right? In which up to the stomach we have already learned. Now today you just see here about the duodenum, liver and pancreas. So this is what? This is a part of small intestine. We are learning about all the organs of the human digestive system now. So what is this? This is the part of small intestine, and this is connected to stomach and two tubes open into it. See here. After stomach what will come? We are saying the small intestine, but there is a pipe between stomach and small intestine, duodenum that is, and here it have two pipes, okay? One is released in the liver and second is in the pancreas. So that is in the liver. This is what? This is gallbladder. What is it? This is gallbladder, and second is what? Pancreas. So what will happen here? These two tubes, one of them, that is the gallbladder, release a green liquid called bile. What it is known as? Bile. And what does it do? It helps us in the breakdown of the fat into the small droplets, right? And so fat digesting enzyme can work more easily. जो भी हमारे अंदर फैट डाइजेस्ट करनी है वो इजी हो जाए, बाइल हमारी वो हेल्प करता है. देन फिर जो सेकेंड ट्यूब है, फ्रॉम द ऑर्गन कॉल्ड पैनक्रियाज, दिस इज अ ग्लैंड एंड प्रोड्यूस अ जूस कंटेनिंग द एंजाइम. वो कौन सा जूस प्रोड्यूस करती है? कौन सा केमिकल? जो कि प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करेगा. फाइन. सो all these liquids that we learn here, they help in the process of small intestine for the process of digestion. Fine. So you can see the picture of all these parts that we learn here. Pancreatic duct is here, gallbladder, this is liver, duodenum, and then stomach vein, जो stomach के साथ point attached है, stomach is here ना, वो उन्होंने show नहीं करा यहाँ पर. So in the next step what will happen? There is a digestion takes place in the small intestine. खाना चला गया सबसे पहले माउथ से कहाँ गया? ईसोफिगस में. ईसोफिगस में से स्टमक में. स्टमक से होता हुआ फ्रॉम दिस पाइप इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. So in the small intestine, that is in this part, the cell lining, the wall of small intestine make enzyme that complete the digestion of carbohydrates and protein. मतलब यहाँ पर प्रॉपर वे से हमारी डाइजेशन होगी जब हमें फूड से एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. सो इन दिस द प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड. वी नो फॉर डाइजेशन वी नीड द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड. सो पहले जो प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? इनटू द अमाइनो एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट्स के दे विल इनटू द शुगर्स, and then fats के into the acids, fatty acids and glycerol. So all these are the small form of these large molecules. So our body now this is ready to digest all these things and provide us to energy. So all these molecules are soluble. They are just dissolved in our body and they are carried by blood to the all cells of body. मतलब सारे जो cells हैं body के वो क्या ले जाएंगे इसे? ब्लड के साथ हमारी बॉडी में इस न्यूट्रिएंट्स का सारा फ्लो हो जाएगा. सो इन दिस वे नाउ दिस टॉपिक इज अप टू व्हाट? डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. टुमारो वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो डू दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड आंसर मी. फाइन. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे.